So if a molecule is AB2 type, okay. So the shape will be, draw this, please try to make this one, okay. Yeah. Number of electrons on the central atom, number of electron pairs. तो ये भी मैं समझाऊंगा कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होता है, ओके. 2 pairs are there, 3 pairs are there, okay. और so don't write it this one, number of pairs छोड़ दो अभी, okay. Write down this one, arrangements of electrons, मतलब इस तरह के ए बी टाइप मॉलिक्यूल बनाओ, ए बी टाइप, एंड द एग्जांपल्स लिखो. शेप इज लीनियर, okay. Oh, Then it's trigonal planar will be this type of shape, and their angle, bond angle is 120 degree. Put it down fast. Done. sure, 1 second. You're done. Draw this one also.
You done? No, sir. Yes, sir. But there is a concept of lone pair. Okay, what is lone pair? Let me explain you what is lone pair. Just a minute, lone pair. अब पृथ्वी का जरा ध्यान समझना. Okay, बेटा, you have to concentrate here. Like, why, for example, if I'm saying if there is a type of molecule that is AB2, AB2. So the shape of this one is AB2 is simply linear. Okay, but an AB3 molecule is trigonal planar. AB4 is tetrahedral. AB5 is trigonal bipyramidal. Then we have AB6 is octahedral. अब ध्यान रखना. Linear shape में if we are having AB2 but L1, one lone pair, one bond has been removed. So L1 मतलब lone pair, the electrons are there. Like for example, if I'm saying AB3 molecule, then its shape is A here and B3 in 3B here. So shape will be like this. What if we have two electrons here? What would be the shape? It will be the shape is only given by the bonds, not the electrons. Let's suppose they have electron. There is AB. Now this molecule will be considered as AB2L1. This is called lone pair cloud, electron cloud. Okay, the two electrons are there. That is called lone pair. Okay, understood? Oh, yes, sir. अभी समझना ध्यान से. If we have AB2 type molecule and it is lone pair, then we will write it AB2L1. AB2L1. It is AB2L1. Lone pair is there. Got it? अब ध्यान से बहुत. Let's suppose now the shape of this one will be bent. We call it V shape or band shape. V shape or band shape. समझ आया? Yes, sir. Actually molecule will be looked like this. अगर लोन पेयर क्या कर रहा है कि इन पर ये जो बॉन्ड पेयर्स है ना, इन पर शेप लगा, इन पर दे इट इज एक्सर्टिंग द फोर्स ओवर इट.
तो कोई ऐसे हमारे हाथ है मान लेते हैं, और कोई इनको दबाए तो ये नीचे चले जाए, तो इट विल बिकम बी बी शेप। Yes, sir. का लोन पेयर नहीं होता तो फिर ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल बन जाता है। AB2 कैसा होगा, ए बी है, मैक्सिमम रिपल्शन पर आ जाएंगे 180। अंडरस्टूड? Yes, sir. So because of the lone pair, it will exert a force over this one, and this will become band shape. Band shape. Got it? Yes, sir. Like suppose if we have AB4 molecule, then its shape is tetrahedral. Tetrahedral. Just imagine. If we have a shape, we have 4B, so shape will be tetrahedral. Like this tetrahedral. Okay? Tetrahedral shape. This is AB4. AB4. But if you suppose, if you remove this B and you have instead of AB4, you have AB3 and one lone pair. There is an electron cloud here. Then shape will become pyramidal shape. This is pyramid, like the pyramid we have now. Pyramid, okay, in Turkey, in Egypt, that shape will be this. Then this shape will be so L1, AB3 L1 shape will be. So you just count if you want to imagine that what would be the shape of AB, AB2, AB3 and L1. So imagine that add this L1 also to B first. So you will imagine that AB3 plus L1 you will get AB4. Now you remember that AB4 is the shape tetrahedral shape. And from the tetrahedral you remove this. Imagine that you remove this vertical line. You remove this vertical line. You remove this vertical line. Okay, got it? Yes, sir. Then if you remove this vertical line, then it will become AB4 molecule. But if you remove it, it will become AB3 and L1. So when you remove it, there is no, then the shape will appear like this. Got it? Yes, sir. Become tetrapyramidal. Now just imagine you remove one more. Now it is AB2 and L2, two lone pairs. So what you will do? Imagine that you remove this one also. And instead of this, you also have one lone pair here in place of this bond. So the shape of the molecule will be like this. I mean, by these two bonds will be appear. So it will be V shape again or band shape. मॉलिक्यूल तो एक्चुअल में शेप ऐसे आ जाएगी ना, इट इज वी शेप. यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन वो दिखेगा थोड़ी ना. तो शेप विल बी ए बी. समझ आया? Yes, sir. सो इसी तरह से what could be the shape of AB5? AB5 molecule is trigonal, like you have A here. This is the perpendicular shape and this is the blow. Got it? Yes, sir. Now this shape is trigonal bipyramidal. Means we have a triangular base like this, triangle like this, and one above it and one below it. Okay. Now suppose if you remove one, because of this is 90 degree, this is at 90 degree, this is making 90 degree. Every perpendicular things, whether it is like this or this, it is always making a 90 degree with this surface. Got it? Yes, sir. So because it is at maximum repulsion, so when you heat it, it will easily remove. Either for the bottom. So like if you have AB4 L1, so imagine that AB4 L1 is made by AB5 only. L1 मतलब one lone pair. So you remove it. Let's suppose you remove from the either from the top or from the bottom, you will have this one. So what would be the shape of this molecule now? It is trigonal pyramidal. That was trigonal bipyramidal. It is trigonal bipyramidal. Trigonal
Bipyramidal. And this one shape is AB5, AB4, L1 shape will be trigonal, only trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. Pyramidal shape. And if you remove one more stick from here, so you will remove it from here. So it is AB4, AB3, L2. Now it is only trigonal. Trigonal planar. Now you remove one more, like you remove one more from it. Okay, got it? So we will Yes, start sir. this type of shapes. So please start writing the E matlab one lone pair. Okay, so that is band shape. The molecule type will be, पहले लिखो फिर समझाता हूँ, पहले लिख लो it. Means where it is dot means it is representing the electron, means there is no element here. So the shape is, actual shape is trigonal planar, but means the arrangement is like trigonal planar, but the shape will be bent. Bent by like this, A and B. Similarly, actual shape is tetrahedral shape, AB3E. But since this shape here it is, we will not count the cloud. The shape is only pyramidal shape. Start writing and I am going to explain you. Sir, can you scroll down?
Done. Sir, done. Now check it. The shape is this one, okay? If you remove, it is actually, imagine this is AB3. 1E means AB3. Add E to B also, then you will get AB3. The shape of AB3 is trigonal, planar, okay? So this E will come in place of one place of one. अगर ये AB3 होता तो यहाँ पर B आता next. लेकिन अब E लेकिन E को imagine मत करो कि यहाँ पे है. So the shape will be band shape, okay? Yes, sir. Like in sulfur dioxide. Sulfur has 6 electrons in its outermost shell. And it is making 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 2 oxygen atoms are there. They are also making bond. Oxygen also have 6. So this 8 will be completed, this 8 will be completed, and this will be completed. Okay, sulfur goes beyond 8. Okay, but because of this electron cloud, these two are participating, these two are participating. Okay, but these electrons are not participating. So in that case, this lone pair will exert a force on this bond pair of electrons, and this will result in bending of this. Okay, the shape of this one will be actually visible like this. Got it? So Yes. that's this one. This one is band shape. Band shape or V shape. We also can consider this. Next type of molecule is AB3 then E. AB3 then E. One lone pair. Actually, it is AB4. Add E to B. We'll get AB4. अब now चौथे नहीं फोर्थ B की जगह पर E रखना है. So you must remember that the shape of ABE. नेक्स्ट भी आप यहाँ रखते हैं, ये टेट्राइडल शेप हो जाती है. ओके, दिस विल बी अ टेट्राइडल शेप. बट आपका जो है वो है AB3E. तो इस B की जगह पर आप E को रख दीजिए. E मींस इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, नाउ द शेप विल बी pyramidal shape. This is the pyramidal shape. Okay, like the pyramid we have. Got it? So it is pyramidal shape. अब नेक्स्ट आता है AB2E2. यानी फिर से आप इसमें इमेजिन करिए कौन सा मॉलिक्यूल होगा. यू विल इमेजिन दैट AB2 and 2F मिलके AB4. AB4 की शेप होती है टेट्राइडल. Okay, now you have to remove the 2, but you actually are having AB2E2. You have to remove 2B from here. 2B from. So when you remove 2B, 1B will be removed from here and 1B will be removed from. So actually, you are going to have a shape that is a band shape. Got it? Got it? Yes, sir. So again, AB2, but it goes to AB2E2. तो यहाँ पे देरी रखा हुआ. सॉरी, AB3E2 में बैंड आ गया. चलो,
दिस इज AB5 मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअल में AB5 है। ओके, AB5 इसमें नहीं दे रखा AB2E2, AB2E2 नहीं दे रखा इसमें। ओके, AB2E2 का एग्जाम्पल हुआ AB2। एक्चुअली में ये यहाँ पर एरर हो गई, ये AB2E2 ही है। देखो यहाँ पे 2B दे रखा है ना, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इट इज एक्चुअली, करेक्शन करो, इट इज AB2E2 Oh, which is, okay, sir. and it is water. Yes, sir. Now we have AB4 and then E, means add E to B you will get AB5। लेकिन उस AB5 में से एक B को हटा करके उसकी जगह पर E रखना, तो AB5 मॉलिक्यूल की शेप आपको याद होनी चाहिए। AB5 मॉलिक्यूल की शेप होती है ट्राइगोनल बाइप्राइमर। ए ठीक है, अब इसमें से एक को हटाना है, तो पहले हम लोग जो मैक्सिमम रिपल्शन पर है, इलेक्ट्रॉन पेयर विल लाइक टू लिव ऑन दैट पोर्शन वेयर इट विल गेट द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। सो अभी मैंने तुम्हें गलती से बता दिया कि ये वाला हटेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन 90 डिग्री का रिपल्शन है। बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल लाइक टू लिव ऑन दैट रीजन वेयर इट इज गेटिंग मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, मीन सबसे ज्यादा रिपल्शन मिले, सबसे कम रिपल्शन पे। सो this is just, you can imagine that this triangle is in a plane, and the two, this one B, this one B and this one B, means this is triangle, these are like horizontal, and this B and this B is below, it is making 90 degree. So but these, this one and this one are making 120 degree angle। so इनमें से मान लेते हैं कि ये वाला B हटा, you are going to have AB4E, AB4E, then the electron cloud will come on this position, and the shape will be seesaw shape। seesaw shape कैसा होता है पता है आपको? seesaw देखा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठता है, वो यहाँ पर एक बच्चा बैठता है, तो इसको हम लोग seesaw, सी, दिस इज द seesaw shape। एक बच्चा यहाँ बैठेगा, बच्चा यहाँ बैठेगा, और ये झूला होता है, seesaw, seesaw, this is called seesaw shape। okay, Yes, sir. the seesaw। नाउ अगर मैं, ये कौन सी शेप हो गई है? AB4E। अगर मैं AB3 कर देता हूँ और E2 कर देता हूँ, यानी एक और, तो फिर इसमें से एक और हटा दो आप। ओके, तो ये शेप होती है टी शेप। अब आप बोलोगे सर ये टी कैसे बनी? दिस इज AB2E2, दिस इज टी शेप। एंड हाउ सर, हाउ इट इज टी शेप, यू कैन से सर ये टी शेप कैसे हुई? तो ये टी शेप में बताता हूँ, ये वाला बी और ये वाला बी एकदम वर्टिकल है। अब इस वर्टिकल लाइन पे मैं यहाँ पे टी एक जोड़ू या ऐसे जोड़ू या ऐसे जोड़ू, मान लेते हैं मेरे पास, इफ आई एम हैविंग अ like this one is my phone and this one is above B and below B। ओके, अब यहाँ जोड़ू, इट विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद दिस वन ना, कहीं भी जोड़ो। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? Yes, sir. दिस टी इज इन द रोटेशन, ये यहाँ पर होता, चाहे वो ऐसे होता, ये आप 3D में देख नहीं रहा, बट इट इज, let me tell you that, let me make this one, you can imagine by just this 3D diagram। तो अगर मैंने बोला, तो ये जो टी है हमारा, दैट यहाँ पर ये और ये नीचे, मान लेते हैं ये एक बी है और ये एक बी। ओके, अब चाहे मैं एक बी को, जो ऐसे था, मान लेते हैं ये ऐसे था, एक बी यहाँ पर था, एक बी यहाँ पर था इसी प्लेन में, और एक बी यहाँ पर था। तो आपने ये दोनों हटा दिए, एक ये वाला हटा दिया और एक ये वाला हटा दिया। तो मान लेते हैं आपने एक ये वाला भी हटा दिया और एक ये वाला भी हटा दिया, तो अभी भी तो ये टी है, इट इज मेकिंग 90 डिग्री। समझ आया?
Yes, sir. ये टी शेप, चाहे आप ये वाला नहीं हटाते, ये वाला रखते हैं, लेकिन यहाँ पे रखते हैं ऐसे वाला, ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है इसके साथ, ओके, इसी प्लेन में। गॉट इट? तो इफ यू आर हैविंग AB5 मॉलिक्यूल में से अगर आप दो को हटाते हैं तो इट विल बिकम AB3E2, और उसकी शेप होगी टी शेप। AB4E में बनेगी सी शॉप, सी शॉप, और AB5, सॉरी एक और हटा दे तो मान लेते आपने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो फिर ये स्ट्रेट लीनियर हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। आपने तीनों हटा दिए, खत्म कर दिए, तो तीनों जगह तो AB2 and E2, तो लीनियर शेप, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर शेप। गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप होती है जिसमें 4 विल बी AB6 मॉलिक्यूल, AB6, चार तो रहेंगे एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, लाइक मोबाइल फोन, बीच में सेंटर पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, और एक बिल्कुल ऊपर और एक जस्ट बिल्कुल नीचे, AB। अब ये सब 90 डिग्री पर रहते हैं, ऑल आर एट 90 डिग्री, तो सब कहीं भी इलेक्ट्रॉन रखोगे बात बराबर है। तो अगर आपने इफ यू रिमूव यू राइट AB5 and E1, एक इलेक्ट्रॉन का रखते हो, तो इसमें से एक को हटाओगे तो क्या शेप बनेगी? AB6 की तो ऑक्टाहेड्रल। अब ये बनेगी स्क्वायर पिरामिडल, या आप इसको रख लो, नीचे वाले को डालो समझाने के लिए। तो इसके स्क्वायर, वैसे ऑक्टाहेड्रल शेप को हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं, बाय पिरामिडल। तो इफ यू रिमूव वन इट विल बिकम स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल शेप, दिस वन शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। इफ यू रिमूव एक और बी को हटा दो तो फिर स्क्वायर प्लेन हो जाएगी, AB4E2, ये वाला भी हट जाएगा फिर, तो फिर AB4E2, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो इट विल बी पिरामिडल शेप, सॉरी स्क्वायर शेप, स्क्वायर प्लेनर। समझ आया? Yes, sir. उसके बाद यही मेनली रहती है शेप, ओके। तो हैव यू रिटन द एग्जांपल्स ऑफ ऑन, ये आपने लिख लिया था ना सही से सब Yes, sir. एग्जांपल्स ऑल्सो? मैडम क्वेश्चन नंबर 4.24,
Sir, I'm done. What could be the answer? Shape of SP is S and P, the two hybrid orbital. The shape of two lobes can be assigned themselves in Sir, linear. linear. SP2, Sir, trigonal planet. no, actually it is two. So SP2 means three new orbitals are formed. Okay, and that would be the SNP. Yeah, trigonal by, yeah, it is correct. This trigonal pyramid. Sorry, trigonal linear. Next one is SP3. Sir, tetrahedral. Very good. Is there any change do you observe when it is going from AlCl3 minus it is forming AlCl4? Now the molecule has been changed. Now AlCl3 means it is AB3 type molecule. It is AB3 type molecule. AlCl3. When it is changing its shape from AlCl4, then it is becoming AB4. Now the shape of this one will be tetrahedral. The shape of this molecule was trigonal. समझ आया? Yes, sir. Next one. Explain the formation of H2 molecule on the basis of valence bond theory. H2 molecule को नहीं पढ़ाया मैंने. Question number 4.38. Describe the hybridization of PCl5 molecule. Why the axial bonds are longer as compared to the equatorial bonds? Note it down. क्यों क्यों longer होते हैं? Because they are at maximum repulsion. They are present at the repulsion of 90 degree. 90 degree पर repulsion होगा तो equatorial bond बड़ा होगा. जबकि axial bond बड़ा होगा. Equatorial bond छोटा होगा. Sorry, why are axial bonds as compared to the equatorial bonds? PCl5 molecule, let me explain you first. PCl5 molecule is this, like P here, C here, Cl, 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 and this one is above the plane, and this one is above. तो जैसे ही हम लोग हल्का सा हीट करेंगे, PCl5 when heated, slightly heated, then it will gives you PCl3 plus Cl2, chlorine gas. Means ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है. Why? Because it is at 90 degree repulsion. 90 डिग्री रिपल्शन पर ज्यादा होगा तो वो वीकर बॉन्ड होगा. वीकर बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है. जबकि ये वाले जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, दीज आर 120 डिग्री एंगल्स जो प्लेन में है.
Okay, these are 120 डिग्री। तो इनमें रिपल्शन ज्यादा है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, जैसे दे आर ओके। तो दिस इज एक्सियल बॉन्ड एंड दिस वन इज इक्वेटोरियल बॉन्ड। नोट इट डाउन। Sir, done. बाकी क्वेश्चन जब रेयान आएगा तो मैं तब विल डू इट लेटर। ओके नाउ have some questions need to practice. Then I'm going to give you some questions regarding to modality and normality. Okay, just a minute. Two question number 1.6. When you done, please no, please write me. Okay.
डन। So I think it's like 15.4. इट इज करेक्ट डन। वेरी वेरी वेल यार। देखा, Yeah. समझ केमिस्ट्री लग रहा है कुछ कि हिला दोगे तुम। Sir? आर यू गेटिंग समथिंग, मतलब केमिस्ट्री समझ में आ रही है बढ़िया से? स्कूल में कुछ अलग सा रिस्पॉन्स रहता है तुम्हारा? Yes, sir. आर यू गेटिंग समथिंग लाइक इफ आई एम सेइंग, स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आर यू गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास? Sir, in this exam I got good in chemistry. कितना आया? Sir, I think it was a 20-mark paper including biology, physics and chemistry, and I got